हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फूल। देखो आमे एबे जो हमर एमसीक्यूज गुडा स्टार्ट करी जे जोटा कि अपकमिंग एग्जाम्स आछे हमर जेमति हाई कोर्ट एएसओ हला एसएससी हला एसएससी सीजीएल हला ओ एसएससी ओ ट्रिपल एस जे कोनोसी ओडिसा गवर्नमेंट रो हो कि स्टेट हमर सेंट्रल गवर्नमेंट रे एग्जाम हो एई सब क्वेश्चन गुडा मैक्सिमम चांसेस अछि आसीबार बिकॉज़ ए सब क्वेश्चन गुडा रिपीटेड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेके सिंपल एमसीक्यूज हमें करूचंती। तो आमे कंप्यूटर पोर्शन कंप्लीट करिके पॉलिटिकल पोर्शन रो ऑलमोस्ट एंड आडको आसी गलेनी। वर्तमान द यूनियन जुडिशियरी रो सुप्रीम कोर्ट ता हमें स्टार्ट करिबा क्वेश्चन आंसर या अगर मु गोटे बेसिक आइडिया दे देबी हमर जोड़े थ्योरी पोर्शन रो सो दैट सेटा गोटे क्विक रिवीजन हो जिवो बिकॉज़ एबे आउ मात्र बहुत कम दिन रहिला गोटे वीक ठु भी कम दिन रहिला हमर अछि हाईकोर्ट एएसओ सेटा पई बहुत हेल्पफुल हबो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या अगर मु तमन को कोन करछि ना थ्योरी पोर्शन टा कंप्लीट करे दोचे। चलो देखिबा थ्योरी पोर्शन टा। Okay, the Supreme Court. Article 124 of the Constitution has the provision of the establishment and constitution of Supreme Court. Hala article केते अछि हमर Supreme Court विषय देछि article 124. It should be understood and it remember करिया को पड़िबो. By the Supreme Court Amendment Act रे हमर फर्स्ट थिले ना हमर 30 टा हमर जजेस थिले तो सेटाको अमेंड करा है कि 30 रु 33 करा है जी डिसाइड द माने चीफ जस्टिस को छाड़ी ओके तो किंतु वर्तमान कोन हिच पुनी तापरे कोन करा हला ना माने कोन हमर सीजेआई हमर चीफ जस्टिस को मिसेले हमर हे जंत केते जनो 34 जजेस वर्तमान हमको मिली छिबे तो एटा कोन हितला अमेंडमेंट हेतला केबे हेतला अगस्त 9 2019 रे हितला एटा अमेंडमेंट ओके तो हमरो वर्तमान एति कि 33 + 1 एटा गोटे कैरेक्टर माने काउंट करा जाय सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मानु को द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली इंग्लिश रे ही केवल तार प्रोसीडिंग्स गुडा को हमरो कंडक्ट करा जाय। Supreme Court rules 2013 replacing the 1966 rules have been framed under article कोथरे फ्रेम हितला 145 of the constitution to regulate the practice and procedure of the Supreme Court. Every judge of the Supreme Court after consulting the Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the President of India. ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोन करंती ना अपॉइंट करंती कहा को चीफ जस्टिस को और अदर जजेस एवरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करंती एटा होछ हमर आर्टिकल 124 हमर मन रहले ना हमर आर्टिकल 124 होचंती सुप्रीम कोर्ट को लेके एटा मन रखा पड़ो और बाकी फैक्ट्स भी तापरे इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट ईच judges of the Supreme Court and the High Court as he thinks appropriate. A person is qualified for कौन तार qualification रहे दरकार गोटे जज होबा पई सुप्रीम कोर्ट रो देखिबा से गोटे सिटीजन हितिबा दरकार से has been a high court judge for at least 5 years 5 वर्ष पई हाई कोर्ट रो जज हिसाब रे काम करथिबा दरकार has been an advocate of a high court or 2 or more courts in succession for at least कौन करिया दरकार 10 वर्ष पर्यंत तांकर गोटे एडवोकेसी रहिथिबा दरकार माने कोन से इंडिया रो सिटीजन हित दरकार 5 वर्ष पर्यंत तांकर मिनिमम गोटे एट लीस्ट 5 वर्ष हाई कोर्ट रो जज हिसाब रे काम करथिबा दरकार देन एडवोकेट हितिबा दरकार हाई कोर्ट रो 2 or more courts in succession for at least 10 वर्ष जाए तांकर गोटे एडवोकेसी रहिथिबा दरकार no minimum age or fixed period of office is prescribed for appointment of a judge of the Supreme Court. A judge of Supreme Court ceases to be so on तांको फीस केमती करा जाय माने तांको हटै जे दिया जाय परिबो या तांको कार्य केबे एंड हबो देखिया तांको जतले 65 वर्ष हे जेतिबो resigning in writing addressed to the president तांको से resign दे देवे president को लेखि की on being removed by the president resigning in writing addressed to the president on being removed by the president the only grounds for such removal are proved misbehavior and incapacity तांको जदि misbehavior और incapacity से देखिया को मिलला then भी तांको remove करा जाई परिबो procedure for removal or impeachment of a supreme court judge
ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭାଲ କରିବାର କେମିତି କଣ ପ୍ରୋସିଜରଟା ଏହା ଇମ୍ପିଚ୍ କରିବାର କଣ ସେଟା ଦେଖିବା ଏ ମୋशन addressed to the president signed by at least 100 members of the Lok Sabha or 50 members of the Rajya Sabha is delivered to the speaker or the chairman कौन ए मोशन गोटे मोशन कड़ा हबो कौन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट को दिया हबो साइन बाय एटलीस्ट 100 जन आमर लोकसभा और 50 जन राज्यसभा मेंबर कौन करिवे ना सेतरे साइन करिवे इज डिलीवर टू द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन स्पीकर को दे परिबे या तो चेयरमैन को दे परिबो ईदर हाउस रे सेटा डिलीवर हे परिबो द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय ए कमिटी ऑफ 3 of the Supreme Court and a distinguished judges माने गोटे मोशन जोड़ा कड़ा है तांको भीतर सेटा किए इन्वेस्टिगेट करिवे एट कमिटी ऑफ द 3 दुई जन थिबे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ गोटे होजंती डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट if the committee find the judges guilty report of the committee is considered in the house where the motion is pending सेटा कोन जदि से माने से फाइंड द जज guilty हिसाब रे से मोशन टा हमर कोन आसीबो हां उसको आसीबो तापरे if the motion is passed in each house by the majority हिसाब रे जदि पास कर हेई गला of the total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting and the address is presented to the president सेटा कोन होबो धीरे धीरे सेटा पास हे जिवो कोन दिटा हाउस रे गेला परे सेटा पास हे जिवो हां तापर कोन होता जजेस इज रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिवन हिज ऑर्डर ऑफ रिमूवल on such address तापर कोन करिवे ना प्रेसिडेंट कोन करिवे तांकर साइन दे देबे या से कहि देबे कि तांको रिमूवल करिया पे द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट इन द सेम for judges of the Supreme Court and the High Court. A procedure dita jako High Court और Supreme Court judges मान पाएं भी same. After retirement, a judge of the Supreme Court cannot plead or act in any court or before any authority within the territory of India. Retirement पर after retirement, a judge of the Supreme Court cannot plead or act in any court. गोटे Supreme Court रो judge हिसाब पर से आउ को lower court रे से काम करि परिबे नाही. Office of CJI under amid of RTI. The Supreme Court on November 13, 2019 held that the office of the Chief Justice of India is a public authority and fall within the amid of the Right to the Information Act. Jurisdiction of the Supreme Court in threefold. तीनटा fold रे हमरो Supreme Court का jurisdiction अछि. कौन first original, appellate and advisory. Disputes between different states of the union or between union and any states in within exclusive original jurisdiction of the Supreme Court. The jurisdiction of the Supreme Court to entertain an application under Article 32 for the issue of writs for the enforcement of fundamental rights is treated as an original jurisdiction of the Supreme Court through called writ jurisdiction. Okay. रीड jurisdiction टा कोन सेटा होची हम सुप्रीम कोर्ट सेटा अंडर आर्टिकल 32 रे आसीबो फॉर द इश्यू ऑफ रीड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट जदि फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन होची से रिलेटेड जोटा हमर जुरिडिक्शन किया जाय सेटा होची हमर रीड पिटिशन ना कर दाखल करा जाय सेटा कोर्ट दाखल करा जाय हमर सुप्रीम कोर्ट रे ही दाखल करा जाय. Okay, the Supreme Court is the highest or court of appeal from all courts in the territory of India. Okay, Supreme Court sabdo hochi highest court. Supreme Court is the highest authority for interpretation of the Constitution. The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish the contents of itself. Okay. The Supreme Court may hear appeals by granting special leaves against any kind of jurisdiction or order made by any court or tribunals. Under advisory jurisdiction, Supreme Court can give its opinion on any matter of law or fact of public importance referred to it by the President. Revised rate of salary and sumptuary allowances of judges of the Supreme Court and the High Court. कौन से मन को रिवाइज है कि सैलरी वर्तमान हेज देखिबा सैलरी रो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होची 2,80,000 तबे जुरिडिक्शन जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होची 2.5 लाख अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होचंती हमर 2.5 लाख जजेस ऑफ हाई कोर्ट होचंती केवल जजेस हो 2.25 लाख तापर देला सैंक्चुअरी अलाउंसेस तंक केते मिलुची हमर चीफ जस्टिस को 45,000 मिलुची तापरे हमर जजेस को मिलुची सुप्रीम कोर्ट 34,000
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को मिलुची 34,000 तापर हमर सेम जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स को मिलुची 27,000 देखो एटा सरीगला हमर सुप्रीम कोर्ट एंड इंस्टेंटली हाई कोर्ट विषय रे ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रे ही जिवो तापर हमें क्वेश्चन आंसर करबो द हाई कोर्ट इज द head of the judiciary in the state there are 24 courts high courts in the country हम country रे 24 टा हाई कोर्ट अछि तो तापर कोन दै छै 3 having jurisdiction over more than one states ओके कोन दै छै तीनटा हाई कोर्ट अछि हमर जोडे कि गोटे रो अधिक हमर हाई माने स्टेट को नेकी अच्छे से टाइम में आगु देखिबा 6 हाई कोर्ट्स कोन इलाहाबाद बॉम्बे गुवाहाटी मध्य प्रदेश मद्रास एंड Rajasthan have 11 permanent benches among themselves. Only Karnataka High Court has 2 circuits benches at Dharwad and Gulbarga. Among the union territories, Delhi alone has a high court of its own. Delhi निजर होता है high court अछि. Other 6 union territories come under the jurisdiction of different state high courts. है कौन देखी यूनियन टेरिटरी भितर दिल्ली एंड निजर गोटे ओन हाई कोर्ट अछि अदर 6 यूनियन टेरिटरीज कम अंडर अलग अलग हमर हाई कोर्ट सहित माने मर्ज होचती तापरे एटा देखिबा every judge of the high court is appointed by the president eta tame apune पढिले in making appointment as a high court judges president can consult the chief justice of india को उसे consult करिवे the governor of the state and also the chief justice of the high court. The judges of the High Court in India is administered oath of the office कि ताको oath देबे governor ही देबे आउ किंतु कोन हबो or some person appointed by him for the purpose. A judge of the High Court can hold office until the age of 62. हमर Supreme Court रो केतना 65. तापर कोन देछि a High Court judge can leave his office by resignation in writing address to the president. Resignation से देले कहा president को but ताको appoint कले governor. By being appointed a judge of the Supreme Court or being transferred to any other high court by the president by removal by the president. ये सब हिसाब रे हमें कौन करबा ना तांको से removal हे परिबे. The mode of removal of a judge of the high court is same as that of judge of the Supreme Court. कौन the qualification for being a judge of the high court कौन था सिर्फ citizen हितवा दरकार ताको 62 एज रो अधिक हेई नथिबा दरकार must have held for at least 10 years a judicial office in territory of India or experience at least 10 years as advocate of a high court 10 वर्ष रो एक्सपीरियंस हेतिबा दरकार तांकर जज हिसाब रे 10 वर्ष रो एडवोकेसी भी तांकर में भी थिबा दरकार और एक्सपीरियंस तांकर थिबा दरकार 10 वर्ष रो एडवोकेसी रो or of 2 or more such courts in succession in India हला मैं सक्सेसिवली दुईटा कोर्ट भी से interchange करले भी चलिबो. Salaries or allowances of the high court judges are charged on the consolidated fund रू ही तांकर आसे. Okay, after retirement a permanent judge of high court cannot plead or act in the court or before any authority in the India except the Supreme Court और high court छड़ा से कौन करिवे ना आउ को लोअर कोर्ट रे से काम माने जज हिसाब रे काम करि परिबे नाही. ओके in the which he has not worked आउ except the Supreme Court and a High Court in which he has not worked कोर्ट काम करनथि सेटे काम करिवे. तापर कोन दै छै द हाई कोर्ट सीट को हिसाब रे डिवाइड हे छै गोटे स्टेट जेमति हमर इलाहाबाद हाई कोर्ट अछि सेटा उत्तर प्रदेश रे अछि. ओके द प्रिंसिपल सीट होछि इलाहाबाद हमर आंध्र प्रदेश रे होछि हमर अमरावती प्रिंसिपल सीट. बॉम्बे रे हमर मर्ज हिची महाराष्ट्र पई अछि दादर नगर हवेली गोवा एंड दामन दीव सब जाक हमर कोथे आछि बॉम्बे हाई कोर्ट बोली आछि. कलकत्ता हाई कोर्ट रे हमर आछि वेस्ट बंगाल अंडमान एंड निकोबार टा आछि. एटा इंपोर्टेंट ए दिटा एग्जाम रे कंपलसरी आसे बहुत एग्जाम्स रे आसी छी. छत्तीसगढ़ टा होछि हमर छत्तीसगढ़ सेम दिल्ली टा होछि. गुवाहाटी टा कोन होछि हमर आसाम नागालैंड मिजोरम एंड हमर अरुणाचल प्रदेश एटा भी इंपोर्टेंट. तापरे गुजरात टा हमर गुजरात रे ही आछि. हिमाचल प्रदेश रे जम्मू कश्मीर और लद्दाख. झारखंड टा झारखंड कर्नाटका टा भी सेम. केरल टा होछि हमर लक्षद्वीप एटा भी इंपोर्टेंट. केरल आउ एंड लक्षद्वीप टा होछि केरल टा. मध्य प्रदेश मद्रास हाई कोर्ट टा होछि हमर कोन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. मद्रास हाई कोर्ट टा होछि तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. मणिपुर टा मणिपुर. मेघालय टा मेघालय. ओडिशा टा ओडिशा. पटना बिहार रे
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ टा आसुची राजस्थान टा होची राजस्थान एंड सिक्किम टा सिक्किम एतिकी होची हमर इंपोर्टेंट कोर्ट एक्चुअली बेसिकली हमर बॉम्बे हाईकोर्ट रे होची महाराष्ट्र दादर नगर हवेली गोवा और दामन दीव को आखो पाखो टेरिटोरी रहला गुजरात को छाड़ी ओके तापर देखिए कलकत्ता कलकत्ता वेस्ट बेंगल अंडमान एंड निकोबर এটা মনে রাখবো গোয়া যেটা হচ্ছে আসাম নাগাল্যান্ড মিজোরাম এন্ড অরুণাচল প্রদেশ মাদ্রাসটা হচ্ছে তামিলনাড়ু এন্ড পন্ডিচেরি ইয়া পুদুচেরি কেরালাটা হচ্ছে লক্ষদ্বীপ কেরালাটা লক্ষদ্বীপ এটা মনে রাখতে পারো এন্ড পঞ্জাব আর হরিয়ানাটা হচ্ছে হরিয়ানা পঞ্জাব এন্ড চণ্ডীগড় এদিকে তেলেঙ্গানাটা হচ্ছে আমাদের ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟଟା ଆମର ଆସୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦଟା ହଉଛି ତାର ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସିଟ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ହଉଛି ଅମରାବତୀ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଟା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡଟା ହଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡଟା ଆଉ ତ୍ରିପୁରାଟା ହଉଛି ତ୍ରିପୁରା ବିଫୋର ଦ ବାଇଫର୍କେସନ of the Telangana as a separate state the principal seat of Andhra Pradesh was at Hyderabad which was established in 1954 ରହିଥିଲା the oldest high court in India କୋଉଟା ଆମର oldest high court in India ଆମର ହଉଛି କଣ ମାନେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଟା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର oldest high court of India ଦେଖିଦବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଟା ହଉଛି oldest high court of India ଓକେ ନା ସେଟା ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି 2019 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଅମରାବତୀରେ situated ହେଲା okay this is the description part now let's go to the question answer part now first question ଟା ଆମର କଣ ଦେଇଛି what does the judicial review function of the Supreme Court means judicial review ତା ମାନେ କଣ ସେଟା ହଉଛି examine the constitutional validity of the law which answer will be C the disputes regarding the election of the president and the vice president of India are decided by ye decide karibo sako Supreme Court ही decide karibo how many types of writs can be issued by the Supreme Court ketara writs amara achi panchta writ the Supreme Court of India enjoys kon enjoy karanti original appellate advisory jurisdiction तीन type ram padithile what makes the judiciary the guardian of the constitution judicial review in the Supreme Court of India the number of judges including the chief justice is now kete jana achanti amaro ebe Supreme Court re achanti 33 na 33 plus 1 e bhul dechi okay tapare dechi amaro kon 7 number question 7 number dechi on which of the following grounds can a judge of the Supreme Court be impeached judge of the Supreme Court impeach केमती पर prove जदि ताकर misbehavior है incapacity to act judges ये दीटा violation of the constitution हला answer will be 2 and 3 तापर देखिए कहते 8 नंबर कौन देखिए public interest litigation or PIL may be linked with कौन judicial activism who holds the power to increase the number of judges in the Supreme Court hold the parliament when there is a vacancy in the office of the president and the vice president at the same time the office is temporarily held temporarily by Chief Justice of India ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସ ଟାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ହୋଲ୍ଡ କରିବେ Now 11 acting chief justice of India chief justice of the Supreme Court in India is appointed by kaha dwara appoint honti president ko dwara who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India or any question of law kiye karanti seita hojundi amra president tapare 13 number ta kon deyichi the power of the Supreme Court of India the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under its original jurisdiction. Sovereignty of Indian Parliament is restricted by Indian Parliament restricted by judicial review द्वारा. तापर देखिए 15 number question. 15 number question कौन देखिए? Who of the following Chief Justice of India acted as the President of India also? किए से Justice M. Hidayatullah कौन जी की Chief Justice of India है थे जे की President हिसाब रे भी हमारा temporarily काम करिथिले. The Indian Constitution provides for the appointment of ad hoc judges
adopt judges eta kon habo Supreme Court, High Court, districts and sessional courts. Which article of the India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with constitutional cases? Se kon habo Article 132 read with Article 134 A. तापर 18 number question kon देछि. Which of the following is correct about the Supreme Court regarding its judgment? कौन सा एटा होजी it can change the judgment. तापर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19. Salaries of the judges of the Supreme Court are determined by कहा तो केमती डिटरमाइन होबो पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन होबो. Which of the following courts in India is or are known as the courts of record? सेटा के हमर the High Court and the Supreme Court. तापर कौन दीजिए which of the following subjects comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court? सेटा के आसुची protection of the fundamental right. The system of judicial review exists in judicial review system that exist in India and USA. तापर देखिए which article of the Constitution permits the Supreme Court to review its own judgment or order. कोर्ट रे हम रिव्यू करिया पे देछि आर्टिकल 137. Who is the custodian of Indian Constitution? के custodian हमरो सुप्रीम कोर्ट. तापर देछि क्वेश्चन नंबर 25. Who has the right to transfer any case anywhere in India? के करि परिबे सुप्रीम कोर्ट करि परिबे. Which of the following is true for Indian judicial system? कोटा हमरो ट्रू. तापर देछि it is an independent institution. हां एटा ही ठीक. हां बाकी ओटा देखे दबो हला. Who is the final authority to interpret the constitution? कोटा हमरो final authority तो जी सुप्रीम कोर्ट. The chief justice of the Supreme Court is appointed by केमते अपॉइंट होते chief justice of the Supreme Court? The president in consultation with the judges of the Supreme Court and the High Court. Answer will be same. तापर दीजिए the Supreme Court of India was set up by the Supreme Court of India set up by the Regulating Act 1773. The Supreme Court of India tenders advice to the president on the matter of law or facts. केमती हेतला only if he seeks such advice. Okay. तापर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन द कॉन्स्टिट्यूशन ए 19th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू कहा को रिलेट करछ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल हमरो कमीशन. आंसर विल बी हमरो बी. तर who was the chief justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? सेटा कौन हबा हमरो PN भगवती. PIL was introduced to the Indian judicial system कहा द्वारा हमरो PN भगवती. Consider the following statements. कौन a statement the Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact. कौन if he seeks an advice. Answer will be 2 माने only 2 आवके देखि दो. ओके तापर क्वेश्चन देखि कौन 34. Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? कौन सेटा original jurisdiction रे a dispute between the government of India and one or more states? Yes, it is right. तापर कौन दीजिए a dispute regarding elections to either house of the parliament or that of the legislation of a state. 9. A dispute between the government of India and union territory? No. A dispute between two or more states. एटा हबो 1 and 4. Answer will be 1 and 4. तापर हमें instantly पळेबा ओके हाई कोर्ट को पढ़ेबा बाकी हमें जी करियो. ओके 18 नंबर द स्टेट जुडिशियरी हाई कोर्ट बिकॉज हमें हाई कोर्ट रो भी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर देले इंस्टेंट 5 मिनट रे साथ दवा. हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ वन कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? की ऑथराइज है जने प्रेसिडेंट हमरो. हु डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट्स why did one of the high courts in India decree that the bonds are unconstitutional and punitive? It infringes on the fundamental rights of some groups of the people. The judges of the High Court hold office hold till they have the age of 62. हम पढ़ते Supreme Court रो 65. तापर देखि मैच करिया पे
ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା ଆସୁଛି ମାଦ୍ରାସରେ ପଢିଥିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବରଟା ମନେ ପକେଇବା କଲକାତାରେ ଠିକ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପଟା କେରଳରେ and Daman and Diu Bombay. The answer will be 1, 2, 3 and okay. Answer will be A. The Chief Justice of the High Court is appointed by kahadara appointed the President on the advice of the Governor of the concerned state concerned and the Chief Justice of India. Question number 6. Which of the following states or union territories have a common high court? कौन? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़. उत्तर प्रदेश आउ सब जगह भूल अच्छी. ओके. तापर दीजिए. 7 नंबर क्वेश्चन. On which of the following grounds can a judge of the High Court be impeached? Judge of the High Court केमती impeach हेबे? Violation of the Constitution? No. जहाँ Supreme Court रो इटरे विषय proved misbehavior incapacity of the judge. Detail का 2 and 3 ठीक तो answer will be D. In which year was High Court in Madras established? Madras High Court established in 1862. Which of the following pairs is not correctly matched? कोटा match करूने. Bombay रे हमर दीची Maharashtra, Goa, Daman Diu, Dadar Nagar Haveli. Yes, this is right. तापर दीची कलकत्ता रो हमर वेस्ट बेंगल अंडमान निकोबार एटा भी ठीक मद्रास रो तमिलनाडु पौंडीचेरी एटा भी ठीक गुवाहाटी रो आसाम अरुणाचल प्रदेश मेघालय और सिक्किम एटा ही हमर गलत आसुची कहीं आसाम अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ठीक अच्छी सिक्किम टा नहीं आ बदले हमर नागालैंड टा एक्चुअली अच्छी ओके तापर देखि 10 नंबर क्वेश्चन there are 21 high courts at present in India हम कोन पढ़थिले 21 तो हमें पढ़ि नथिले तापर देखि कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट्स were established in the year 1862 तो आंसर कौन होबो 10 नंबर रो आंसर will be 1 and 2 ହେଲା ଦିଟା ଜାଗା actually ଠିକ ଅଛି ଆମର କଲକାତା ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାକ 1862 ରେ ହିଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲେ assertion ଗୋଟେ reasoning ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି an award made by a लोक अदालत is deemed to be a decree of a civil court award तापर reason कौन ଦେଇଛି award of the लोक अदालत is final and binding on all parties and no appeals lies against their to before any court the answer will be आमर कौन हम एटा तार रीजन एक्चुअली नुह हला आंसर विल बी आमर कौन हम सी हबो ए होची ट्रू बट आर इज नॉट द रीजन कारण सेटा कि जे फाइनल नुहे लोक अदालत रो एटा फाइनल नुहे कि बाइंडिंग भी नुह का ऊपर जबरदस्त में थोपी पारिबो ना तापर देछि कोन देछि 12 नंबर द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया is the brainchild of ये brainchild कहारो जस्टिस भगवती तब the high court judge addressed his letter of resignation to कहा को से दियंती supreme court को दियंती which of the following Indian state doesn't keep its own high court कहार निजरा हाई कोर्ट नहीं मणिपुर निजरा हाई कोर्ट नहीं आ बाकी समस्त अच्छी which one of the following high courts has the largest number of benches कहार largest number of benches अच्छी ଆମର ଅଛି गुवाहाटी हाई कोर्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस अछि which one of the following is not the main jurisdiction of the high court of a state सेटा कोड ना एडवाइजरी जुरिडिक्शन नाही ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुपरवाइजरी एपेलेट एगुडा सब अछि किंतु एटा मेन जुरिडिक्शन कोड ना एडवाइजरी जुरिडिक्शन अछि मेन नो तब द फर्स्ट हाई और सुप्रीम कोर्ट जज who voluntarily made public his asset is किए करथिले ना हमर जस्टिस के कानून करथिले हला वॉलंटरीली से हमर मेड पब्लिक हिज एसेट निज एसेट को पब्लिक करथिले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया कोन हमर दीजे 18 नंबर देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन इंडिया ना एटा हमर कोटा ठीक एक्चुअली से देजी So there are 3 of them have jurisdiction over more than one states. हाँ इटा ठीक no हमरो no union territory has high courts of its own. को union territory high courts निजरो नहीं है ठीक judges of the high court hold office till the age of 62. Actually हमारा यूनियन टेरिटोरी माने हमारा यूनियन टेरिटोरी सब दिल्ली रो तो निजरो ओन हाई कोर्ट अछि तो इटा भी हमारो एटा ही हमारा गलत होगा तो 1 2 and 4 is right okay 1 2 and 4 is right तापर देखिए to which of the following
Funds are salary and allowance of the judges of High Court of the state charged. Consolidated fund ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି consolidated fund of the state ହେଲା High Court ରହିଲେ. Which one of the following High Court has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar? କାହାର? କଲକାତାର. Consider the following statements. On the highest criminal court of the district is the court of district and session judge. এটা ঠিক ଅଛି. ଓକେ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? The district judge are appointed by the governor consultation with the High Court. A person to be eligible for appointment as a district judge should be an advocate of a pleader of 7 years standing or more, or an officer in judicial services of the Union of the States. When the session judges awards death sentence, it must be confirmed by the High Court before it is carried out. Consider the following statement. 22 number ta dekhiba. There are 21 high courts in India. Okay, this is right. Punjab, Haryana and the Union Territory of Chandigarh have the common high court. Yes, this is right. National Capital Territory of Delhi has a high court of its own. The answer will be D 1, 2 and 3. सब जगह ठीक होची. Accession and reason बोले देखिए. In India, every state has a high court in its territory. Okay, এটা তো ঠিক নয়. সমস্তଙ୍କର ନିଜର high court ନାହିଁ. The Constitution of India provides a high court in each state. Okay, हाँ, এটা ঠিক ଅଛି. The answer will be D. 24 कौन ଦେଇଛି? From this statement, consider the mode of removal of a judge of the High Court in India is same as the removal of the judge of the Supreme Court. This is right. After retirement from the office, a permanent judge of the High Court cannot plead or act in any court or before any authority. The answer will be only one. Okay. How many high courts in India have jurisdiction over more than one state? Okay. Good state. How many high courts in India have jurisdiction of more than one? Actually, it is 3 hour answer. 25 na? Answer will be maybe answer 3 hi hobo na? With reference to Lok Adalat, which of the following states is correct? Lok Adalat can deal with matters which are civil, not criminal in nature. এটা হচ্ছে আমারও ঠিক আছে. লোক আদালত ক্যান ডিল উইথ ম্যাটার, সিভিল ক্রিমিনাল কেস কু সে নেই পারিব না. না এটা यूनियन टेरिटरी को जेहेतु एक्सक्लूड करिया नॉट इंक्लूडेड तो सेति पे दुईटा ही हबो. तो आमी वर्तमान कंप्लीट कर देले सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. এটা বহুত লেंथी वीडियो हे गेला. इट्स ओके बट हमर वीडियोटा बहुत वर्दी अछि. सो नॉट टू वरी. आमे नेक्स्ट अलगा चैप्टर को जिबा ए हमर पॉलिटी सेशन रही. सो एटा को वीडियो एठी एंड करिकी आमे नेक्स्ट काली भी आउटे वीडियो स्टार्ट करबो. So till then, hope you like all my videos. If more video is interesting and helpful, then do like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.